Maharashtra, a state that prides itself on good governance, silence has become the loudest response to one of the most chilling cases of abuse of power. A 28-year-old woman doctor, educated, independent, and serving at a government hospital, allegedly raped multiple times by a police officer. For months, she pleaded for help. She wrote to his seniors, she begged for action, but no one listened. And then, one day in Satara, she was found dead in a hotel room. On her palm, her last words were carved in ink, words that now stand as evidence of everything the system chose to ignore. A woman who healed others died unheard. A government that claims to protect women now looks away from taking responsibility that they would demand from non-BJP leaders. A police system built to ensure justice stands accused of destroying it. For days, the corridors of power have been silent. No minister has spoken, no leader has demanded answers. But we decided to ask the questions they want. We traveled to Satara, where it all began, and then to Beed, her hometown, where her family now demands justice. This is not just the story of one woman's death. This is a story about the rot within our system and the silence that shields it. We now go on to this ground report filed by my colleague Ankit Salvi. He took a bus, then an auto, first to reach Satara. To find the truth, NDT reached Maharashtra's Satara district where a 28 years old female doctor committed suicide. Currently I am standing just next to the Madhudip Hotel where in room number 114 a doctor ended her life. Currently, I am at Fulton Sub-District Hospital where a female doctor was working over here. I am Dr. Anshuman Dhumal. I am in charge medical superintendent of this hospital since June 24. When I heard about the incident, I was just shell shocked. I rushed to the site where the police had called me up. Immediately I rushed. I reached the spot within 5 minutes. Shell shocked, a very tragic incident. The community has lost a very confident, hardworking, intelligent doctor. She was very sincere in the profession, good by nature. As a doctor, she had a very good clinical acumen. She was good at her work, did her work sincerely, hardworking, enjoyed the work over here. She had opted out sub-district hospital since January 23. There were occasions when she had resigned later for her preparation of the postgraduate NEET examination, but looking after certain circumstances, because she had given it in writing, later she decided to continue the job only in Fulton. Even we cooperated with her and gave her the continuation with the help of the higher authorities of Satara Civil Hospital civil surgeons. We reappointed her here. She had opted out Fulton on regular basis just because she enjoyed working over here because of the cohesive atmosphere and very friendly environment. So sir, you said it's about the friendly environment, about her how hardworking she was. So, but as per the record, like in the month of June, there was a letter which was given to the DYSP about a police inspector where they were pressurizing her to provide a fit to unfit certificate. Can you just elaborate a little bit about the fit to unfit certificate, how it happens, and is that anyone from her from this hospital who was also pressurized about this?
See, first of all, the letter given to the DYSP was given by late Dr. to the DYSP office directly in the month of June. I think the date is 16th or 19th. We are not, the office hasn't received any complaints regarding this, and there was an issue of fitness which was sorted out after the talks, and none of my other colleagues working out over here were pressurized for false certificate. Sir, but you said about the there was a talk and it was solved. So what issue was there to about the fitness certificate between the police and the medical authorities? Or right now I won't be able to comment on this because the inquiry is going on, so I'll speak to you in details later on this issue. On October 23rd, she was found dead inside a hotel room. On her left palm were the words, "Police Inspector Gopal Badhane is the reason I died. He raped me 4 times. He subjected me to assault, mental and physical, for more than 5 months." This was not the first time that she had spoken up. On June 19th, she had written a letter to the Deputy Superintendent of Police in Fulton, accusing 3 officers of harassment and seeking legal action. But no one acted. After her death, Sub-Inspector Gopal Badhane was suspended. Another man, Prashant Bankar, has been arrested. Badhane later surrendered. The investigation, they say, is underway, as if this has been an open-shut case. A life is no more. She cannot fight for herself. But when she was fighting for her dignity and life, did people choose to stand by her? Some will now resort to name-calling, question her character. It's always very convenient to question the dead. But we question the silence of those who are alive on behalf of those who can't. Our team traveled to Beed, 7 hours from Satara. Her family shared what she had endured and how every warning she gave was simply ignored. महाराष्ट्र का कवड़ गांव, जहां पर अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बीड से करीब 2 से ढाई घंटे दूर है। कच्चे रास्ते, और यहाँ पर आने के लिए इतनी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। तो इस गांव में एक किसान के परिवार को, एक किसान के पिता को अपनी लड़की को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। अभी फ़िलहाल मैं कवड़ गांव में उसी परिवार के साथ हूँ, किसान परिवार के साथ। आइए उनसे बात करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। दादा नमस्कार। मला सगळ्यात पहिलं तर तुम्हाला सॉरी बोलायचं आहे की आम्ही तुमचा इंटरव्ह्यू घेतो आहे। शेवटचं बोलणं पुरीबरोबर कधी झालेलं? म्हणजे दीपावलीच्या आदल्या दिवशी 2 दिवसांनी अगोदर मी फोन लावला होता तिला, म्हणलं ताई कधी येणार तू दीपावलीला? तर ती म्हणाली मला दीपावलीत काही सुट्टी मिळत नाही, मी भाऊबीजेच्या त्या दिवशी तुमच्याकडे येईन म्हणली। आणि भाऊबीजेच्या त्या दिवशीच हे केलं रात्री। किती तुम्हाला त्रास झाला, कितना स्ट्रगल हुआ, किती प्रयत्न असे झाले की तुम्ही तुमच्या मुलांना डॉक्टर बनलं? ती एक जर्नी सांगा की डॉक्टर बनवायच्या मागे तुम्ही किती कष्ट घेतले? मी अक्षरशः ऊस तोडला, कारखान्याला गेलो आणि कारखान्याच्या मेहनतीतून मी माझ्या मुलीला डॉक्टर केलं। कारखान्याला ऊस तोडून मी डॉक्टर केलं। किती परिश्रम झाले तुम्हाला?
लय कष्ट घ्यावं लागले, भरपूर कष्ट घ्यावं लागले डॉक्टर बनवण्यासाठी. मी तिच्या शिक्षणासाठी एज्युकेशन लोनसुद्धा घेतलं आहे SBI का बँकेचे, शिक्षण लोन. आणि ते फिटलेलं नाही. एवढं सगळं सुरू आहे, या सगळ्या गोष्टी चालू आहे सरकारकडनं. कारण जिकडे ही घटना घडली त्याच्या 100 मीटरवर 2 दिवसानंतर चीफ मिनिस्टरांची रॅली स्पीच होती. तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांचा काही कॉल वगैरे आलेला सरकारकडनं? काहीच नाही, मुख्यमंत्र्याचं काहीच नाही, आणि कॉल नाही ना, काही कुठला आधार नाही ना, काहीच नाही. उलट ते तिकडंच जाऊन एवढा कार्यक्रम इथं एवढं हे घडून तिथं जाऊन आणि त्यांच्याशीच ते त्या ठिकाणी तपलंच वर्चस्व दाखवतात. आमच्याकडं काहीच नाही त्यांचं, काही आम्ही असं करू तसं करू, काहीच नाही. सरकारकडनं कोणी भेटायला आलेलं, चीफ मिनिस्टरकडनं त्यांच्याकडनं कोणी भेटायला आलेलं? ते बीड जिल्ह्यातले लोक आले, ते सरकारचे जे काय असतील BJP ते बीड जिल्ह्यातले आले, पण ते नाही आले. ती कोण महिला अध्यक्ष ते तिथं आलीच नाही तर नाहीच. पण आमच्या मुलीच्या चारित्र्यावर शितुडे उडवा तिकडे गेली आरोपी. काय बोलले? काय ते आता मला सांगतात, मला काही सांगता येत नाही काय बोलली, पण चारित्र्यावर शितुडे उडवले. ती मुलगी अगोदरच अशी होती तशी होती. तुम्हाला वाटतंय की पोलीस ह्याच्यामध्ये काय व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन करेन? कारण फलटणमध्येच झालं आहे आणि फलटणचेच पोलीस करतात. त्या पोलिसावर आमचा कसलाच विश्वास नाही. आमचा फलटण पोलीस सिटी पोलीस स्टेशन असेल किंवा ग्रामीण पोलीस स्टेशन असेल किंवा तिथले ते दवाखान्यातले कोणचे जे काय लोक आहेत, तो धुमाळ अधिक तिथले राजकीय लोक असतील, आमचा त्यांच्यावर कसलाच विश्वास नाही. इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काय सुरू आहे सांगितलं आहे का? पोलिसांनी काय सांगितलं की इथपर्यंत सुरू आहे, 2च जण पकडले? काहीच नाही. आणि कसल्याच नुसतं त्या ठिकाणी नुसते उडवाउडवीचे उत्तर देतात. काहीच नाही आम्हाला सांगितलं. आमचं कुठल्या प्रकारचं कागद नाही, मिळून जाईन पोस्टम काय असतं ते कागद, कुठला कागद नाही, कुठला प्रूफ आमच्याकडे दिला नाही, काही नाही. नुसतं मिळून जाईन म्हणते. तिचे जे वस्तू आहेत त्या वस्तूसुद्धा आमच्याकडे नाहीत. काहीच नाही दिलं? काहीच नाही. नुसतं मिळून जाईन, पण कधी जाईन, कधी मिळून जाईन. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये काय आहे ते तरी सांगितलं? काही नाही आमच्याकडं, आणि कसल्याच प्रकारचं त्याचं कुठलाच प्रूफ नाही. ती बॉडीसुद्धा आम्ही जायच्या अगोदरच कुठं कोण्या हॉटेलमध्ये फाशी घेतली म्हणतात, आणि दवाखान्यात पोस्टमास्टमच्या त्या ऑफिसमध्ये आणून ठेवली. आम्हाला माहीत नाही, आमचं कुणी नातेवाईक तिच्याजवळ नाही, काही नाही. तर आपलं जे सरकार जे आहे ते बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या सगळ्या गोष्टी करताय, आणि तुम्ही जे शेतकरी असून त्यांनी बेटी बचाव का बेटी माराव केलं? बेटी बचाव कशाला तोंडानं म्हणताय? नुसती बेटी माराव तरी म्हणा. लाडकी बहीण योजना काढली, कशाला रे बाबानो? सुरक्षित बहीण योजना काढा की तुम्ही सुरक्षित द्या ना त्यांना. सर नमस्ते. सर आपका नाम? मेरा नाम का भाई हूँ. अच्छा, छोटा भाई हूँ. सगे भाई हो? सगे भाई हूँ. अच्छा, तो दादा मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहली बात जो है, आखिरी बार आपने संपदा के साथ कब बात की थी? आखिरी कॉल मैं संडे को की थी, दोपहर के वक्त. उस समय उसने मुझे उसको पीजी के लिए नंबर लग रहा था अभी, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे. उसने मुझे यही लगता थे ना, मतलब तहसील से निकालना था, तो उसने मुझे कॉल करके बताया था. तो वो मैंने सोमवार को डाल दिया था और ये गुरुवार के दिन ऐसी घटना हुई. जो है वो फलटन में कब से है और कब से वहाँ पे काम कर रही है? लगभग 2 साल हुए उसको काम करते हुए फलटन में. आखिरी बार वो कब यहाँ पर आई थी कवर अपने गांव में परिवार से मिलने के लिए? आखिरी बार एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, तकरीबन 4-5 महीने पहले मैं बीड़ में था, वही हमारी मुलाकात हो गई थी. उसे ड्यूटी के लिए जाना था, इसीलिए वो वहीं से चली गई. वो 4-5 दिन रुक के आपको मिली थी? हाँ, हमको मिली थी. तो जब वो आपको मिली थी 4-5 महीने पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत पहले से जनवरी से ये शुरू हुई है, तो छोटे भाई
होने के नाते, एक भाई होने के नाते, क्या आपको उसने कभी बताया कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में हो रही हैं? नहीं, उसने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो बताती थी कि काम में थोड़ा प्रेशर होता है। हमें लगा कि वो डॉक्टर का काम में थोड़ा प्रेशर होता ही होगा, ऐसे इतना सीरियस होगा हमने कभी सोचा नहीं था। और वो जिस घर में रहती थी, जिस परिवार के साथ रहती थी, क्या उस परिवार के साथ आप लोगों ने कभी बात की? वो बनकर परिवार जो है उनसे कभी बात हुई थी वहाँ पे वो रहती थी? नहीं, मैंने तो नहीं की, लेकिन मम्मी पापा गए थे वहाँ, एक दिन रहे थे भी, पिछले 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले वहाँ उनकी बात हुई थी शायद। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल जब आपको ये जो है ये कब, आपको कितने बजे ये पता चला और ये किसने बताया कि आपके बहन ने ऐसा किया है, आत्महत्या की है? ये सबसे पहले किसने बताया? लगभग 7 साढ़े 7 बजे मेरे भाई के पास फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन से, वडोनी से, शाम को। उन्होंने बताया कि आपकी बहन ने, मतलब आपके उनके कौन लगते हैं, हमने बोला भाई, तो उन्होंने बताया कि उसने सुसाइड किया होटल रूम में। पीएम पोस्टमार्टम करने से पहले फैमिली की कुछ परमिशन ली थी? फैमिली से बात की थी कि आपके आने से पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। मेरा भाई डॉक्टर था, वो मुझे कजन, वो रुकना चाहता था उसके पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उसे एफआईआर करने में बिजी रखा। अच्छा। लगभग 7-8 घंटा उसको बिजी रखा एफआईआर फाड़ने में। 7-8 घंटे? 7-8 घंटे, हाँ। उसकी वजह से वो जा नहीं पाया एफआईआर पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम उसे करना था, वो करना नहीं, वो प्रेजेंट रहना रहना वो था। भी डॉक्टर था इसीलिए। तो भाई को प्रेजेंट रहना था, लेकिन उसे एफआईआर का फाड़ने में बिजी रखा। कितने बजे से कितने बजे तक लगभग पोस्टमार्टम का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन सुबह 7 बजे से लगभग 7 बजे से दोपहर के 2-2:30 बजे तक एफआईआर फाड़ने में लगाया दिया। इतना समय एक एफआईआर लिखने के लिए? हाँ, लगभग 7 से 8 बार उन्होंने एफआईआर की करेक्शन लेके बार बार एफआईआर लिखने के लिए बोल रहे थे। और क्या अभी परिवार आप लोगों को पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं, जो कि पीएम नोट्स आधे 1 घंटे में दे देते, लेकिन अभी तक नहीं मिले। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली। तो इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, कहाँ तक पहुँचा है, पुलिस ने कुछ बताया? नहीं, इसकी कोई भी हमें जानकारी नहीं दी गई है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आखिरी कॉल कब आया था पुलिस की तरफ से? नहीं, उन्होंने हमने ही किया था कि वो न्यूज़ में दिखा रहे थे कि पीएम रिपोर्ट वगैरह आ गई है, तो हमने पूछा था कि मिलेंगे या नहीं, तो वो बोले वो हम दे नहीं सकते, आपको खुद आकर देखना पड़ेगा, दे नहीं सकते। खुद आकर देखना? हाँ। तो आपने क्या कहा? हमारे पास कुछ ये वो ही नहीं था, हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब वो दे नहीं सकते, बोले दे नहीं सकते। नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है वो तो बताया आपको? नहीं, वो भी नहीं बताया? नहीं बताया। आज 4 से 5 दिन हो गए इस हादसे को, क्या पुलिस ने कुछ बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वो क्यों उस होटल में गई? क्या आपको लगता है कि ये सुसाइड है या कुछ और? नहीं, उसने तो कुछ न, मतलब पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी टाइमलाइन कुछ भी हमें पता नहीं है अभी तक। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी अभी अच्छे से शुरू नहीं हुआ, हमें ऐसे लगता है। आपको लगता है कि फलटन पुलिस जो है वो न्याय दे पाएगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर पाएगी? नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जो इससे पहले जो देगा, मतलब उस रिपोर्ट के दौरान जैसे कि बॉडी हमारे बिना हलाई, वैसे जगह पे मोबाइल सील नहीं किया, जो कि मोबाइल लगभग 7 बजे पता चला था पुलिस को, तो 11:13 पे मोबाइल लास्ट सीन दिखाता है व्हाट्सअप का, मतलब तब तक मोबाइल का व्हाट्सअप ऑन था लास्ट सीन, मतलब वो पूरा इन्वेस्ट करने की साजिश है। लगभग पुलिस ने कहा था कि 7:15 पे उनको पता चला कि सुसाइड हुआ है, वह तब से लेके उसी दिन 11:13 तक व्हाट्सअप का लास्ट सीन दिखा रहा है, अभी भी दिखाता है। अभी भी दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मोबाइल जगह पे सील होना चाहिए पुलिस के अनुसार, लेकिन वो 2-3-4 घंटे बाद हुआ है, तब तक सील तक नहीं हुआ, इसलिए हमें लगता है कि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं।
जिस तरह से अभी हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सुसाइड है, क्योंकि उसने पहले भी लिखा था कि मुझे फरवरी से मानसिक रूप से त्रास है वो। इस अगर इस पुलिस तरफ प्रशासन की तरफ से अगर इससे कुछ अनुचित हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसने लिखा है उस पत्र में, जो कि पहले जून में दिया था मुझे, उसके एक नोट्स में है उसके। The suicide note isn't just a goodbye. It's a charge sheet against a system that turned her workplace into a torture ground. In that 4-page letter, she wrote how she was coerced by the police officers to alter medical reports and even post-mortem findings to protect the powerful and frame the helpless. She mentioned a member of parliament who allegedly threatened her for refusing to cooperate. Where is that member of parliament? We found testimonies from people who say that they too were victims of manipulated reports under the same pressure. But now those who knew her are simply silent. Her friends are too scared to speak on camera. This silence, this fear, says everything about how deep the rot runs. Let's go back to the ground for what our team uncovered next. नमस्कार, मी भाग्यश्री मारुती पाचांगणे, राहणार बावधन, तालुका वाई, जिल्हा सातारा. माझी मुलगी दीपाली मारुती पाचांगणे ही इंजिनियर होती. तिचा विवाह अजिंक्य निंबाळकर यांच्याबरोबर, अजिंक्य निंबाळकर राहणार वाटार, तालुका फलटण यांच्याबरोबर 20/11/2021 या वारी झाला. म्हणजे 17 ऑगस्टला सकाळी आम्हाला फोन आला की आमच्या जावयांचा फोन आला की दीपाली खूप सिरियस आहे, फलटणच्या राऊत हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, तर तुम्ही तिघेही लवकर या. फलटणला गेलो, दवाखान्यात गेलो, तर आम्हाला तिच्या दिरांनी डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटलला नेलं आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावरती तिच्या दिरांनी सांगितलं की किरकोळ भांडणावरून दीपालीने गळफास घेतला आणि डायरेक्ट आम्हाला बॉडी दाखवली. पण मला खूप संशय आहे, हे असं घडू शकत नाही, माझी मुलगी असं करू शकत नाही. आणि तिला हा खून केलेला आहे, ती करू शकत नाही असलं. तिला 6 महिन्याचं गरोदर होती ती, आणि तिला एक 3-1.5 वर्षाचं बाळ आहे. त्याला सोडून ती असं कशी करू शकल? नाही करू शकत ती. आणि मला खूप संशय आहे ह्याच्या नवऱ्यावरती की खरंच ह्यांनी घरात काय केलंय ते आम्हाला काही माहीत नाही. तिथं ज्या ठिकाणी झालं त्या दिवशी पंचनामा पण झाला नाही. ज्या दिवशी झालं त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी पंचनामा झाला, तोपर्यंत त्यांनी तिथले पुरावे सगळे नष्ट केले होते. आणि PMचे रिपोर्टसुद्धा आम्हाला त्याच वेळेस संशय होता की हे PMचे रिपोर्टसुद्धा खोटे आहेत. पण आता हे संपदा मुंडे या डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आणि ह्याला जबाबदारसुद्धा हे राजकीय नेते आणि पोलिसांच्या दबावाखाली झालेला आहे. म्हणून आम्हाला आता पूर्ण संशय आहे की माझ्या दीपालीचं सुद्धा ह्यांनी असाच PM रिपोर्ट खोटा बनवलेला आहे. म्हणून माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की ह्याची खचून तपासणी व्हावी आणि माझ्या मुलीला न्याय मिळावा. The death of this young doctor has shaken Maharashtra and India at large, but not enough to move its leaders to speak. A woman dies after naming her rapist a serving police officer. She writes the truth on her skin so that it cannot be erased. What does it say about us? Even when a doctor backed by education, position, and knowledge of law finds no protection, this is not RG Court 2.0. This is India's shame to the power infinity. What happens to the countless women with no voice, no title, no hope of being heard? Justice, they say, will follow investigation. For now, all that remains is a note on a palm and a system that refused to see it until it was too late.